Assalamu alaikum. Welcome to Virtual University of Pakistan. My name is Sara Ahmed, the lecturer on the course sta408 Design and Analysis of Experiment is going to deliver on the behalf of Virtual University of Pakistan. The lecture number 8 is about factorial design. Before going into the detail of factorial design, it is required to understand what is factor and their levels. Experiments are often planned to investigate the effects of different rates of fertilizers, different dates of planting, different categories of education, different intensities of a stimulus, and so on, in which the independent variables such as fertilizers, planting, education, stimulus, these are called factors, and their values such as rates, dates, categories or intensities at which a factor is held fixed are known as levels. About the factors and levels, this understanding is already developed in the lecture 1. Now, what is factorial design? Up till now, all of the experiments considered involved only one factor and its effect on a measured variable. All these different designs we have studied previously represent restriction on randomization, and the interest was still centered on the effect of single factor. When it is required to study the more factors together, then the most efficient method is factorial design. Sometimes we conduct an experiment with one factor and we get result that may be precise or may not be precise, but we don't think the other aspect when we are not gaining precise results. So if we will consider the more factors, then it is possible that we can gain the more precise conclusion. For example, in the experiment of fertilizer, our experimental conclusion is insignificant. Then maybe problem is in taking not proper level of watering, cultural practice, or maybe improper rate of seeding. An experimenter was studying the level of watering 4 times in a month and amount of seeding 60 kg. Maybe if the experimenter changed the level of watering as 8 times in a month and 60 kg of amount of seeding. Suppose if we change the level of this factor 60 kg to 50 kg, it is possible that he or she will get better result. And if the experimenter will study the amount of seeding as 80 kg, और अगर एक्सपेरिमेंटर 80 kg अमाउंट ऑफ सीडिंग को 8 टाइम्स इन अ मंथ लेवल ऑफ वाटरिंग के साथ स्टडी करे, पॉसिबल है कि उसे बेहतर रिजल्ट्स मिले. और 80 kg अमाउंट ऑफ सीडिंग के साथ 4 टाइम्स इन अ मंथ लेवल ऑफ वाटरिंग को कंसिडर करे तो मे बी उससे भी बेटर रिजल्ट्स मिले. इस तरह डिफरेंट फैक्टर्स और डिफरेंट लेवल्स को स्टडी करने से आप बेटर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं. अगर एक्सपेरिमेंटर कल्चरल प्रैक्टिस को फोकस करे, उसके कंक्लूजन ज्यादा प्रिसाइज हो सकते हैं. सपोज अगर एक्सपेरिमेंटर क्रॉपिंग कर रहा था इन रोटेशन और अब वो अपनी कल्चरल प्रैक्टिस को चेंज करे क्रॉप इन गैप्स. अगर आप सिंगल फैक्टर को सेपरेटली स्टडी करेंगे तो ये डिफिकल्ट प्रोसीजर है टू कंबाइनिंग एंड कंपेयरिंग ऑल देयर लेवल्स.
For this purpose, we have to study all the factors together, and the most significant method to consider all factors, that may be two or more than two, is factorial design. Let we take another example in which we can apply the factorial experiment, such as in comparing weight gain of animals are kept on different diets, animals of both sexes from several breeds and fed by different methods may be used in a factorial experiment. By using each method of feeding each diet of both sexes of each breed, it is also possible to study whether the best method of feeding varies from diet to diet, or whether the optimum method or diet depends upon the sex and breed of the animals. Suppose a businessman's goal is to gain maximum weight of a chicken in minimum time. May he would study the factors breed and take the levels of breed as B1, B2, B3, B4. Diet is another factor, D1, D2, D3. And the sex is masculine, feminine. When the experimenter will combine all these factors and their levels, then those treatment combinations can be applied and we will get a better result, that which combination is providing the best results. इसी एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं और ये देखते हैं कि ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस किस तरह से बनेंगे. A factor is diet. I am denoting it with capital D, D1, D2 and D3. Gender or sex, I am denoting it with G. Diet 1 will be provided to the gender masculine and feminine as well. Diet 2 will also be provided to masculine and feminine, and diet 3 will also be performed in the same way. Then we have to consider the breed levels B1, B2, B3 and B4. First treatment combination would be level of the breed 1, masculine and diet 1, B1, F, D1, B1, M, D2, B1, F, D2, B1, M, D3, B1, F, D3, B2, M, D1, B2, F, D1 and up to so on. All these are treatment combinations. Factorial design is a platform which allows us to study two or more factors together. In factorial design, it is customary to represent the factors by capital letters, just as A, B, C, as we have shown in the previous example, and levels in small letters A, B, C, and so on. An experiment is called a factorial experiment if the treatments consist of all possible combinations of several levels of several factors. When each treatment combination is used the same number of times, the factorial experiment is known as a complete factorial experiment. The experiment is described as Pn factorial experiment, where n shows factors and each factor is considered at p levels. If I write it as 2, 2,
It means there are two factors each at two levels. Same as if I write it as 2 की power 3, it means there are three factors each at two levels. And if I write it as 3, 2, it means there are two factors each at three levels. You can also write it as 2 into 2, the number of factors, and it is showing the level of each factor. If I write it as 3 into 4, it means there are two factors, but the factor number 1 contains 3 levels and the factor number 2 contains 4 levels. The methods considered already for grouping and for controlling the variation by randomization also apply in factorial design. In a factorial experiment, there are two types of effects. One is main effects and others are shown as interaction effects. What are the main effects? A main effect of a factor is defined as a measure of average change in effect produced by changing the level of the factor. It is measured independently of other factors and is the effect of the factor only. It means it is not affected by the other factors. It is the main effect. It is the effect of the factor only. A main effect is sometimes regarded as an interaction of zero order. Interaction of zero order का मतलब है कि main effect में सिर्फ factor का effect है, इसका किसी के साथ कोई interaction नहीं है. So interaction is of zero order. Interaction effects. Factors are said to be interact when they are not independent, but interaction in a factorial experiment is a measure of the extent to which the effect of changing the levels of one or more factors depends on the levels of the other factors. Interactions between two factors are referred to as first-order interaction, those concerning three factors as second-order interactions, and so on. Suppose you have three factors A, B, and C. The main effects would be A, B, and C. Interaction effects A into B. It means it is a first order interaction. A, C, B, C. These are the first order interactions. When you will consider it as A, B, C, it means second order interaction. And so on. As the number of factors increases, the order of interactions will also be increased. What are the advantages and disadvantages of factorial experiment? Advantages are: a factorial experiment is usually economical. All the experimental units are used in computing the main effects and interactions. The use of all treatment combinations makes the experiment more efficient and comprehensive. The interaction effects are easily estimated and tested through the usual analysis of variance. The experiment yields unbiased estimates of effects which are of wider applicability. Disadvantages are as follows. A factorial experiment requires an excessive amount of experimentation when there are several factors at several levels. For example, a factorial arrangement of 8 factors and each at 2 levels requires 256 combinations. And the number of combinations in case of 7 factors and each at 3 levels
would be 2187 combinations. And it's a huge number, 2187 treatment combinations. To overcome this difficulty, we use a device known as fractional replication, where certain properly chosen levels of factors are omitted. A large number of combinations जब use किए जाएंगे तो it can cause decrease in the efficiency of the experiment. The experiment may be reduced to a manageable size by confounding some effects considered of little practical consequence. यानी जब आपके पास 256 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस हैं या 2187 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस हैं तो कुछ इफेक्ट्स को मर्ज करेंगे ताकि प्रैक्टिकली आप अपने एक्सपेरिमेंट को बेटर कर सकें, लेकिन ये आपके एक्सपेरिमेंट की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है. The experiment setup and the resulting statistical analysis are more complex. Let me take an example to understand the analysis of the factorial design. A soft drink company is studying the effect of percent carbonation represented by capital A, the speed C, and operating pressure capital B on the filler on the volume of the carbonated drink pack. In each bottle, 3 levels of carbonation, 2 levels of pressure, and 2 levels of speed are selected, and a factorial experiment with 2 replicates is conducted. The order in which 24 observations are taken is determined randomly. The coded data are given in the table as operating pressure capital B 25 and 30 its levels, line speed C 200 and 250, and the percent carbonation 10%, 12% and 14%. There are 2 replicates. रेप्लिकेशन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया था कि आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं और फिर आपके पास ये देखें यहाँ पर डिफरेंट रिजल्ट्स आए हैं. अब हम यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस देख लेते हैं. सपोज आई को हम ए और उसके लेवल्स ए से शो कर देंगे, जे फॉर बी, के फॉर द फैक्टर सी, L shows for number of replicates as N. अब हमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस प्रोसीजर को फॉलो करना है और वो उसी तरह से जैसे आप पिछले डिजाइन्स में करते रहे हैं कि आप करेक्शन फैक्टर निकालेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स निकालेंगे, मीन स्क्वायर्स फाइंड आउट करेंगे. इस एग्जाम्पल में हाइपोथेसिस को इस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे, H नॉट इफेक्ट ऑफ मेन इफेक्ट्स is insignificant. H1 alternatively आप इसका लिखेंगे कि वो significant है. H नॉट प्राइम, मैं सिर्फ नल हाइपोथेसिस लिख रही हूँ, ऑल्टरनेटिव आप इसके ऑपोजिट लिखेंगे. इफेक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर interaction is insignificant. H not double prime. Effect of second order interaction is insignificant. क्योंकि इसमें आपके पास 3 फैक्टर्स हैं और मैक्सिमम आपके पास सेकेंड ऑर्डर इंटरेक्शन हो सकता है ए बी सी. अगर 4 फैक्टर्स होते हैं फिर आपके पास थर्ड ऑर्डर इंटरेक्शन भी होता है. और आप हाइपोथेसिस को इस वे में भी बना सकते हैं. H नॉट में ले लें इफेक्ट ऑफ फैक्टर ए इज इनसिग्निफिकेंट, then factor B
C, then second order interaction BC, then for AB, AC up to so on ABC, और alternatively के इफेक्ट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं. अल्फा उसी तरह से 0.05, टेस्ट स्टेटिस्टिक आपका F है और क्रिटिकल रीजन को भी आप उसी वे में करेंगे. मैं आपको इसका एनालिसिस बता रही हूँ कि वो किस तरह से आप परफॉर्म करेंगे. ग्रैंड टोटल फाइंड आउट करने के लिए पहले ईच सेल वैल्यू को सम कर लें. -4, -1, -1, 2, 11, 21, 5, 16, 3, 13, 1 and 9. Summation y dot j dot dot summation y I dot 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 -4, 20, 59, 6, 15, 20, 34, and the grand total is 75 from both sides. Correction factor is 75 square divided by 24. It is 234.375. Total sum of squares, summation I j k l y I j k l square minus correction factor. Square the each observation and then sum. -4 square plus 1 square plus 9 square plus -1 square plus 3 square plus up to so on 21 square minus correction factor is 234.375, and the total sum of squares is 118 minus 234.375 is 336.625. Then you require SSA, sum of squares of the factor A. Summation I yi dot 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 square over BCN. जोन सा आप फैक्टर यूज करेंगे उसके नंबर ऑफ लेवल्स को डिवाइड नहीं करेंगे. यानी अब ये आपके पास फैक्टर ए के लिए है तो डिवाइजर में BCN लेंगे माइनस करेक्शन फैक्टर. SSA is equal to -4 square plus 20 square plus 59 square. ये हमने मेन टेबल में ये वैल्यूज फाइंड आउट की हैं. डिवाइडेड बाय 2 into 2 into 2 माइनस करेक्शन फैक्टर की वैल्यू 234.375 and finally the answer is 252.75. Sum of squares for another main effect, that is factor B. Summation J y dot j dot dot square. अब ये B है इसलिए यहाँ पे ACN यूज होगा माइनस करेक्शन फैक्टर. SSB is equal to 6 plus 15 square plus 20 plus 34 square divided by
3 into 2 into 2 minus 234.375। जब आपने फैक्टर ए के लिए निकाला तो आपने इन सम्स को यूज किया -4, 20 और 59। लेकिन जब आप फैक्टर बी के लिए फाइंड आउट करें तो बी के अंदर भी डिवीजन हुई है लाइन स्पीड के लिए, तो आपको इसे कंबाइन करना है ताकि आप फैक्टर बी के एक लेवल का रिजल्ट और फिर दूसरे लेवल का रिजल्ट सम करें। इसलिए आपने यहाँ पे 6 + 15 करेंगे तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रेशर दैट इज कैपिटल बी 25 psi, उसके लिए आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 30 psi के लिए आपको इन दोनों वैल्यूज को सम करना है तो आपके पास फैक्टर बी के सेकेंड लेवल की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये 4 डिवीजन्स फैक्टर सी के लिए की गई हैं जब आप ऑपरेटिंग प्रेशर और लाइन स्पीड दोनों फैक्टर्स को साइमल्टेनियसली डील कर रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे 6 + 15 स्क्वायर प्लस 20 + 34 स्क्वायर किया। SSB आपके पास आ जाएगा 45.375। अब आपको SSC फाइंड आउट करना है। समेशन K y डॉट डॉट K डॉट स्क्वायर ABN माइनस करेक्शन फैक्टर। C फाइंड आउट करने के लिए 6 + 20, यानी आप 200 की वैल्यूज जो हमने दो कॉलम्स में डिवाइड की हैं उनको कंबाइन करना है। तो आपके पास लाइन स्पीड C के लिए 200 लेवल की एक वैल्यू आ जाएगी, प्लस 15 + 34 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 into 2 into 2 माइनस करेक्शन फैक्टर की वैल्यू पुट करें। SSC is equal to 22.042। You can see here कि लाइन स्पीड 200 दो कॉलम्स में वैल्यूज डिवाइड है, इसलिए आपको 6 + 20 करेंगे तो लाइन सी के फर्स्ट लेवल की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह लाइन स्पीड C के लिए 250 लेवल की वैल्यू के लिए आपको 15 + 34 करना है तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी इसके सेकेंड लेवल की। मेन इफेक्ट्स के सम ऑफ स्क्वायर्स हमने फाइंड आउट कर लिए, SSA, SSB एंड SSC। अब हमें इंटरेक्शन इफेक्ट्स के सम ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट इंटरेक्शन इफेक्ट इज A एंड B। SSAB फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको मेन टेबल से A और B की वैल्यूज पिक करनी है और एक सब टेबल बनाना है। इस सब टेबल से जो हम कैलकुलेशंस करेंगे वो आपके पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ AB आएगा, जिसमें से आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ A एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ B। वैल्यूज फॉर A क्रॉस B सब टेबल इज -5, 1, 4, 16, 22 and 37. Formula is total sum of squares A cross B is AI, और जो इसके नंबर ऑफ लेवल्स हैं A के वो हम स्मॉल a से शो करेंगे। J for B, YIJ डॉट डॉट स्क्वायर ओवर। अब आप देखिए यहाँ पर A और B यूज हो रहा है, इसलिए डिवाइजर में C यानी कि नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ द फैक्टर C एंड नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस को डिवाइड कर देंगे माइनस करेक्शन फैक्टर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स A क्रॉस B, ईच ऑब्जर्वेशन को स्क्वायर करें सब टेबल में से, -5 स्क्वायर plus 1 square plus up to so on 37 square divided by 2 into 2 minus करेक्शन फैक्टर है 234.375। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स A क्रॉस B is
303.375। अब हमें सम ऑफ स्क्वायर्स ए बी चाहिए। टोटल सम ऑफ स्क्वायर जब आपने सब टेबल से कैलकुलेट किया है तो उसमें मेन इफेक्ट्स भी इन्वॉल्व हैं, और मेन इफेक्ट्स के सम ऑफ स्क्वायर्स हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स ए बी माइनस सम ऑफ स्क्वायर्स ए माइनस सम ऑफ स्क्वायर्स बी, क्योंकि हमें सिर्फ इंट्रैक्शन इफेक्ट का सम ऑफ स्क्वायर चाहिए। 303.375 माइनस 252.75 minus 45.375, and you will get sum of squares AB 5.25. Similarly, हमें another interaction effect which is A cross C, उसका sum of square भी find out करना है। इस टेबल की वैल्यूज को भी आप मेन टेबल से पिक कर लें। -5, 1, 6, 14, 25 and 34. Similar way में total sum of squares AC summation I summation K yi dot k dot square divided by bn minus correction factor। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स AC के लिए सब टेबल AC की वैल्यूज को स्क्वायर करके सम करें और डिवाइड कर दें B क्रॉस N पे, यानी 2 into 2 4 पे। 509.75 minus 234.375. Total sum of squares AC is 275.375. Again, we require sum of squares AC. So subtract the sum of squares of A and sum of squares of C from the total sum of squares AC. SSAC is 0.583. Now we will go for subtable B cross C, third interaction effect, first order interaction. Pick the values from the main table and 34. Proceed in a similar way. Total sum of squares BC summation J K Y dot j k dot square divided by an minus correction factor। a 3 है, यानी फैक्टर a के 3 लेवल्स हैं और n आपके पास नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स 2 हैं। ईच ऑब्जर्वेशन को स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 34 स्क्वायर। Total sum of squares BC is 68.46. Sum of squares BC, total sum of squares BC minus sum of squares B minus sum of squares C. And finally, sum of squares BC is 1.041. Now we need second order interaction ABC. Put the values in the table -4, -1, -1, 2, 1, 3, 5, 11, 9, 13, 16, 21. It is basically your main table because all the 3 factors are involved. Total sum of squares ABC is summation I, summation J and summation K yi j k dot square divided by
n minus correction factor. You have to find out the sum of each observation, which is squared plus up to so on. (21 square), number of replications 2, minus correction factor 234.375, and total sum of squares A, B, C is 328.125. Sum of squares A, B, C find out करने के लिए आपको total sum of squares A, B, C में से माइनस करना है. सबसे पहले आपको मेन इफेक्ट्स माइनस करने हैं. And you can notice that in the table, all the main effects and interaction effects are involved. And we need only the sum of squares A, B, C, second order interaction. So subtract all the first order interactions as well. Sum of squares A, B, C 1.084. एरर सम ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने के लिए टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स में से टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स एबीसी माइनस कर दें, बिकॉज टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स एबीसी इन्वॉल्व्स all these main effects, first order interaction and second order interactions as well. So you will get a result 336.625 minus 328.125, which is 8.5. और आप इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं कि आप टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स में से माइनस करें सम ऑफ स्क्वायर्स ए बी सी ए बी ए सी बी सी एंड एस एस ए बी सी एज वेल. Now put all the values in the ANOVA table as source of variation. Main effects were A, B, C. First order interaction in the examples can be A, B, A, C, B, C, and second order interaction A, B, C. Then error and total. प्रोसीजर जो बेसिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग का है वो सेम है जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि सबसे पहले आप हाइपोथेसिस बनाएंगे. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस एग्जांपल में हमने अल्फा 0.05 लिया है. देन आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखना है. टेस्ट स्टैटिस्टिक आपका f इज इक्वल्स टू मीन स्क्वायर इफेक्ट ओवर मीन स्क्वायर एरर. तो हर इफेक्ट का मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरर होगा. देन कैलकुलेशंस हमने की, उसके बाद ANOVA टेबल बनाया, critical region, and finally conclusion. I have merged the step of critical region in which we calculate the tabulated values. In the last two columns you can see F tabulated and DCN. For convenience and understanding I am presenting that here, but you have to put it separate. अब देखिए आपका सबसे पहला मेन फैक्टर A का था, उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2, बिकॉज फैक्टर A के 3 लेवल्स हैं. 3 minus 1, A minus 1, 3 minus 1 is 2. देन फैक्टर B के 2 लेवल्स थे, B minus 1, 1. Just as A minus 1, it means 3 minus 1, 2 आ जाएगा. B minus 1, 2 minus 1, 1 आ जाएगा. C minus 1, again 1, बिकॉज आपके पास फैक्टर C के भी 2 ही लेवल्स हैं. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को मैंने इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग पुट किया है. You can see that the degrees of freedom for factor A is A minus 1, for factor B, B minus 1, because in the start I told you that small a shows the number of levels in the factor A, same as for B and C. फैक्टर C डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज C minus 1. इंट्रैक्शंस की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को जो जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनके अकॉर्डिंग A minus 1 into B minus 1, A minus 1 into C minus 1, B minus 1 into C minus 1. जब आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर इंट्रैक्शन है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर है, आपके पास 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं.
A-1 इंटू B-1 C-1। टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को आपने A, B, C, N-1 से फाइंड आउट करना है और एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम A, B, C इंटू N-1 है। इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग टेबल में हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस एग्जाम्पल के लिए फाइंड आउट की हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स जो कैलकुलेशन के स्टेप्स में फाइंड आउट किए वो सब यहाँ पे पुट करते हैं। मीन स्क्वायर, एज यू नो इट वेरी वेल दैट सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो मीन स्क्वायर आ जाएगा। मीन स्क्वायर A 252.75 divided by 2, you will get a result of 126.375, same as for all other effects के उनके sum of squares को corresponding degrees of freedom पे divide करें तो आपके पास mean squares आ जाएंगे। mean square effects के बाद आपको find out करना है F। ये लास्ट टू कॉलम्स अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर पुट किए हैं ताकि आप इनके इफेक्ट्स और उनके डिसीजंस को साथ ही यहाँ पर देख सकें। कैलकुलेटेड एफ यानी आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक, हर इफेक्ट को एरर के मीन स्क्वायर पे डिवाइड करना है। सपोज फर्स्ट आप देखें मीन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर एरर, सेकेंड आएगा मीन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय mean square error, same as for interactions। टेबुलेटेड वैल्यू आप f के टेबल में देखें, टेबल में new1 new2 है, new1 आपका यहाँ पे 2 और new2 जो है वो 12 होगा। आप इन सबको इस तरह से भी लिख सकते हैं new1 new2 new3 up to so on 4 5 6 7 and new8, और ये सारी वैल्यूज आपकी इसी तरह से आ जाएंगी new1 कॉमा new8 new2 कॉमा new8 को देखने से 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 2 12 112 112 212 212 112 एंड फाइनली 212। अब आप इनको कंपेयर करें। एज यू नो दैट कि अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर इक्वल होगी टेबुलेटेड वैल्यू से, देन नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। Here is the calculated value is greater than tabulated value. It means the null hypothesis is rejected. Effect of factor A is significant. Because H0 में हमने लिखा था effect of factor A is insignificant. This is also greater than, effect is significant, effect is again significant. It means all the main effects are significant. This is less than from the tabulated value. Interaction effect AB is insignificant. This is also less than, and it is also less than insignificant. It means all the first order interactions have insignificant results. And the second order interaction is also representing that the calculated value is less than the tabulated value. It is also providing the insignificant results. You can write the conclusion in a words and separate that column of F tabulated in a step of critical region. One practice question is, the quality control department of a fabric finishing plant is studying the effect of several factors on the dyeing of cotton synthetic cloth used to manufacture men's shirts. 2 operators, 3 cycle times and 2 temperatures were selected, and a factorial experiment with 2 replicates is conducted. The results are as follows in the table. Analyze the data and draw conclusions. Here is the data. एक फैक्टर है आपके पास टेम्परेचर, उसके 2 लेवल्स हैं 300 डिग्री एंड 350 डिग्री। ऑपरेटर के भी 2 लेवल्स हैं 1 2। साइकिल टाइम आपका एक फैक्टर है, उसके 3 लेवल्स हैं 40 50 एंड 60। अब हम रो में जो साइकिल टाइम है इसको अगर C से शो करते हैं और I फॉर द फैक्टर C एंड उसके लेवल्स स्मॉल c आ जाएंगे। J फॉर द टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम अगर R से डिनोट करते हैं
फॉर आर और इसके जो लेवल्स हैं वो स्मॉल आर हो जाएंगे. के फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर को मैं यहाँ पर अगर पी से शो कर दूं, दिस इज पी और स्मॉल पी इसके लेवल्स होंगे. एल आपके पास नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस हैं. एन, अब देखिए यहाँ पे आपके पास फैक्टर सी साइकिल टाइम 3 है, टेम्परेचर के 2 लेवल्स हैं, ऑपरेटर भी 2 हैं और नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस 2 हैं. यानी आई वेयर इज 1 2 अप टू सो ऑन सी है. जे वेयर इज 1 2, ये जनरली हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि 1 2 अप टू सो ऑन पी. L 1 2 अप टू सो ऑन N है. जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया है, यहाँ पे भी आप हर सेल का टोटल फाइंड आउट कर लें. सपोज 23 + 24 इज 47. इसको सम करेंगे 58 47 74 71 72 76 72 52 70 55 एंड 73. उसी वे में आपको सबसे पहले करेक्शन फैक्टर इसके लिए फाइंड आउट करना है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स. फिर इसके मेन इफेक्ट्स आपके पास कौन कौन से बनेंगे, सी आर पी, ये मेन इफेक्ट्स होंगे आपके पास. सी आर सी पी आर पी, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर इंटरेक्शन इफेक्ट्स हैं. सी आर पी सेकेंड ऑर्डर इंटरेक्शन. सो आप करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, फिर आप मेन इफेक्ट्स के सम ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करेंगे, देन सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर इंटरेक्शंस, and finally second order interaction and error sum of squares. Error sum of squares के लिए total sum of squares minus total sum of squares for the second order interaction minus करेंगे तो आपके पास error sum of squares आ जाएगा. इनके formulas उसी वे में जिस तरह से previous example को solve किया है. जो degrees of freedom बनेंगी for main effect, अगर आपका factor c है तो c minus 1 3 minus 1, r के लिए r minus 1 which is 2 minus 1, p ऑपरेटर के भी 2 लेवल्स हैं, p minus 1 2 minus 1. सो जब आप इंट्रैक्शंस लेंगे तो फिर आप c minus 1 r minus 1 c p अप टू सो ऑन, इस तरह से आप सबके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करेंगे. सम ऑफ स्क्वायर्स उन्हीं लाइंस पे फॉर्मूलाज को यूज करते हुए, देन मीन स्क्वायर्स के लिए सम ऑफ स्क्वायर्स को आपने उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करना है. तो मीन स्क्वायर्स आ जाएंगे, हर इफेक्ट का मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरर मीन स्क्वायर. आपके पास एफ स्टेटिस्टिक की वैल्यूज आ जाएंगी, उसको टेबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करें और कंक्लूजन्स ड्रॉ करें. दिस लेक्चर इज ओवर. In the next lecture, we will study about some specified cases of factorial design in which we will fix the levels of the factors at 2 and the factors may vary. That is called 2k factorial design, in which there are k factors and each factor contains 2 levels. 2k factorial design की डिटेल को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और कुछ specified cases 2 square factorial design in which 2 factors each at 2 levels and 2 cube factorial design 3 factors each at 2 levels. इनके analysis को भी in detail discuss करेंगे. Thank you so much.